Hello, young friends. Welcome to my YouTube channel. I am Group Captain A.K. Srivastava. Young friends, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. Imagine you are a language teacher. What, in your opinion, will give the better assessment of or a true assessment of your pupils about the language learning? That is, a seen passage or an unseen passage. मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि till about your class 10th, you have been given an unseen passage, और you read that passage, आप उसको पढ़ते हैं और उस पैसेज पर दो चार सवाल होते हैं, and depending on your answer to those questions on the unseen passage, the teacher draws a conclusion about the level of your learning. और ये बात फैक्ट है, किसी भी लैंग्वेज टीचर से पूछिए, वो कहेगा कि अनसीन पैसेज आपकी लैंग्वेज एबिलिटी या आपकी लर्निंग का अच्छा या बेटर रिजल्ट देता है इन कंपैरिजन टू दिस सीन पैसेज. यंग फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बात लागू होती है एसएसबी में टीएटी स्टोरीज के ऊपर. You know that you have to make a story, you have to prove your creativity by making the story on some pictures, and these pictures, as per the rules of the SSB, they are supposed to be confidential and only the participating candidates can see. And the selection boards, they make all out efforts not to allow these pictures come out in the environment. अब यंग फ्रेंड्स, इसी के बारे में मैं आपसे दो चार बातें कहना चाहता हूं. पहली बात तो ये, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कुछ लोगों ने एसएसबी की जो एक्चुअल पिक्चर्स हैं वो एनवायरनमेंट में शेयर कर दिया है, या कैसे आ गई है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन सम ऑफ माय ओन स्टूडेंट्स, they have shared at least a few pictures, let's say about a dozen of them. जब पिक्चर्स आपके पास पहले से ही मौजूद हैं, जाहिर सी बात है आपने पहले से ही स्टोरी बना रही होगी. तो एक बात बताइए, ये टेस्ट कैसा हुआ? ये एक सीन पैसेज के जैसा है या अनसीन पैसेज जैसा है? द आंसर इज वेरी क्लियर दैट दिस टेस्ट is like the test on a seen and well read passage. जाहिर सी बात है, ये टेस्ट आपकी ट्रू एबिलिटी, यानी अगर आपको पिक्चर्स के बारे में पहले से ही पता है तो ये आपका ट्रू टेस्ट नहीं होगा. दूसरी बात, आप में से बहुतों ने, एंड आई एम रियली वेरी वेरी पेन्ड टू सी दिस ट्रेंड पिकिंग अप, आप में से बहुतों ने ये मान करके रखा हुआ है कि इट इज लाइक एनी अदर एकेडमिक एग्जाम इन विच द प्रैक्टिस, द मॉडल आंसर एंड द नॉलेज ऑफ द थिंग्स इन एडवांस इज गोइंग टू हेल्प यू. तो आप लोगों ने क्या किया है, आपस में डिस्कस करके, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करके, कुछ टॉपिक्स उनकी लिस्ट बना लिया है कि ऐसी अगर पिक्चर आती है तो उसको इस तरीके से उनकी स्टोरी का प्लॉट होना चाहिए, या उसमें से ये टास्क होना चाहिए और टास्क को इस तरीके से अचीव करना चाहिए.
यंग फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है इन सारी चीजों के बावजूद, यानी कुछ पिक्चर्स एनवायरमेंट में आ चुकी हैं और कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रिगार्डिंग द टास्क्स या रिगार्डिंग हाउ टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, this is well discussed, this is well familiar to the students, to the aspirants, should I say. And despite all these things, the selection board is not not showing any upward trend. Selection board की जो रिजल्ट का स्टैटिस्टिक्स है उसमें कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है. In fact, the selection is becoming thinner and thinner. And if one reason I, as a psychologist, is going to ascribe to all this is the tendency of the candidates to know the things in advance. Young friends, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं. क्या आपने सोचा है कि साइकोलॉजिस्ट आपकी इमेजिनेशन टेस्ट करने के लिए why he says that you have to make a story on the situation that you see in the pictures? वो पिक्चर्स प्रोजेक्ट करता है और कहता है कि इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और स्टोरी बनाइए. व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट द आउटकम विल बी. कभी सोचा आपने इसके ऊपर? ऐसे भी तो हो सकता था कि साइकोलॉजिस्ट कुड से कि मेक अ स्टोरी ऑन दिस पर्टिकुलर थीम. व्हाई देयर इज अ पिक्चर प्रोजेक्टेड? तो यहीं पे इसका आंसर ये है कि this is the test of your apperception. And what is apperception? Apperception is a step beyond perception. इसको एक उदाहरण से समझते हैं. Let's understand apperception with an example. Imagine you see a picture in which you find a man in the street walking. As long as you're perceiving him to be a person, a man, a woman of certain age, and the action is walking, it is perception. लेकिन why is that person walking on the street? क्या पर्पस है, क्या उसका इंटेंशन है? जब आप पर्पस और इंटेंशन उस परसेप्शन के साथ जोड़ते हैं तब इट बिकम्स अ परसेप्शन. As per a technical definition in psychology, apperception is the meaning assigned to perception. आपको हम थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट दे रहे हैं. लेकिन क्यों? एक्चुअली द सिलेक्शन बोर्ड्स आर सीइंग इन यू अ प्रोस्पेक्टिव बैटलफील्ड कमांडर. मैं अपने गाइडेंस प्रोग्राम्स में कहता हूं बार बार कि आप ये समझिए कि सिलेक्शन बोर्ड्स आपकी उन क्वालिटीज को टेस्ट कर रहे हैं जो एक इन्फेंट्री फील्ड कमांडर उसको जरूरत होती है उन क्वालिटीज की इन द एक्चुअल बैटल सिचुएशन. एक्चुअल बैटल सिचुएशन में क्या होता है? यू आर देयर, एनिमी इज देयर, बोथ आर सीइंग ईच अदर आई टू आई. अब सपोज एनिमी कोई स्टेप उठाता है. रिमेंबर द बैटल इज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन, वेरी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन. एनिमी कोई स्टेप उठाता है. मान लीजिए कि एनिमी के 4 टैंक्स हैं जो आपकी तरफ आ रहे थे. सडनली 2 दाएं चले जाते हैं, 2 बाएं चले जाते हैं. अब देखिए, एज अ बैटलफील्ड कमांडर, it is your job to find out what is the aim or the purpose, what could be the aim or the purpose of this move of the enemy in the battlefield. तो आपका अपरसेप्शन जितना ही फेयर होगा, आपका काउंटर मूव उतना ही इफेक्टिव होगा.
यानी सीधी सी बात है, आप अपने दुश्मन के दांत तभी खट्टे कर पाएंगे जब आप उसकी इंटेंशन को, उसकी नीयत को, उसके एम को, वो क्या करना चाहता है। रिमेंबर, यू हैव टू रीड द लाइन, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। और इसीलिए फ्रेंड्स, हम इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ टॉपिक इन दी वर्बल फॉर्म कि आप इस थीम पर बनाइए, वी गिव यू अ पिक्चर, हाउ यू सी दिस पिक्चर। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली, including my own student, I am not making my own students exception. आपका डोजर असेसमेंट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर मैं कर रहा हूं, और फिर एक तरीके से मेरे दिमाग में एक सरप्राइज एंड अ फ्रस्ट्रेशन बैठता चला जा रहा है कि इस टेंडेंसी के खिलाफ आप लोगों, मतलब यू आर टू कन्विंस्ड दैट यू हैव टू write a story on some topics which is pre-prepared. और आप में से कुछ लोग तो कुछ और भी स्मार्टनेस दिखाते हैं, जिसको समटाइम्स जोकिंगली मैं कहता था कि ये फ्रेंड एंड काउ ऐसे सिंड्रोम है। यानी लाइटली इमेजिन कि एक बच्चा, उसने काउ के ऊपर वो ऐसे तैयार करके गया है, लेकिन एक्चुअल ऐसे आ गया कि राइट एन ऐसे ऑन योर फ्रेंड। अब बच्चे ने स्मार्टनेस दिखानी शुरू की। सो आई हैव गॉट अ फ्रेंड, लेट अस से उसका नाम XYZ है, रमेश, सुरेश, पुनीत, जो भी है, एंड पुनीत हैज गॉट अ काउ, एंड देन सारा उसके रेफरेंस में काउ का ऐसे उसने चिपका दिया वहीं पे। यंग फ्रेंड्स, ये स्मार्टनेस एकेडमिक फील्ड में तो चल सकती है, लेकिन बैटल फील्ड में नथिंग प्री डिसाइडेड वर्क्स। You have to think on the spot. Only your creativity is going to help you. Otherwise, if you are depending on the, the listed ideas, I'm afraid that the battle will definitely not be in your favor. And you understand the consequence of a losing battle. Your troops will be hacked or they will be taken as a prisoner of war. You will lose the battle. And remember that you go to the battle only to win it. There is nothing like a silver medal in the war. You have to show your best. And you can show your best only when you are depending on your own abilities, friends. मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि some people think that they are entering the system and that is the last time they have to show their capabilities. No, sir, you are sadly mistaken. Entry point, that means the SSB is only the first step, sir. इसके बाद आपकी एक्चुअल परीक्षा इसके बाद होनी है. You have to survive the training first. And unless you have got the qualities, unless you have got the merit, it will be very difficult for you to survive even in the merit. And let me assert here that as a young officer, your job will be maximum in the operations. And operations, they will not spare your life and limbs, and you will come out successfully in the operations only when you have got the merit. Friends, please, for heaven's sake, the test of SSBs, इसको आप टेस्ट ऑफ मेरिट समझिए, टेस्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी समझिए. Don't take it as a test of memory or retention. Yes, maybe the small, very small, a minuscule proportion of the people, they have sneaked in the system. All right, human errors is possible. Har jagah, wherever your selection is based on some human judgment, it is possible.
But let me tell you, you may survive elsewhere, but certainly not in a fighting organization like the armed forces. So friends, abhi bhi time hai. Please do not repeat, do not trust the idea of going with the pre-prepared stories. कितने सारे वीडियोस में मैंने आपसे कहा है, आपको कॉशन किया है, these are the unhealthy trends. These have been spread by those people who do not understand the mechanism of human behavior. They are not in a position to connect it with the larger picture of what will be your job in the armed forces as an officer. Friends, मैं आपसे न केवल रिक्वेस्ट करता हूं, I would like to impress upon your minds very, very firmly, very, very strongly that never believe in going with a pre-prepared list of tasks or pre-prepared stories or pre-prepared, the sentences. Please trust your faculties, trust your, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर मैं एक मैंने वीडियो में लिखा भी था, one guy, sir, I'm preparing the stories on some 65 pictures. I think he was the first person who was indicating that he has already got this, some pictures from the selection boards. I just trashed his idea. Sorry, sir, I cannot repeat. I cannot give any kind of a comment, or I won't like to involve myself in such a type of preparation where the person is depending on repeated ideas, rehearsed ideas. To cut the long story short, friends, please, especially in TAT, do not repeat, do not depend on pre-prepared ideas, pre-prepared stories. There will be a gap, there will be a mismatch in the perception and perception. We give you 30 seconds to watch the picture and then make a plot. Utilize the 30 seconds for perceiving the picture and attach the meaning to the perception. That is, let it remain purely the spontaneous test of your perception. I hope you got my point. Wish you the best of luck. And for the sake of those people who have not approached me despite their, their curiosity and exploration, so I would like to tell them that my next batch is starting on 22nd. Young friends, secure your seat by using this link and paying just 500 rupees as your commitment amount. Take the screenshot of this particular slide. Approach me for dossier assessment and online mentorship programs. Thank you very much. God bless you. Have a nice day.